Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ एसएसटी डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, हम जो आपसे बात कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग के चैप्टर कैश बुक एंड पेटी कैश में लेक्चर नंबर 4 है इस सीरीज़ का, कैश बुक का। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम अपनी कैश बुक को मेंटेन करते हैं। यानी कि हमने आपको पहले भी बताया कि कैश बुक जो होती है, बिज़नेस में होने वाली जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम अपने पास एक बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी कि जिस भी वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ, यानी कि पेमेंट की गई, और जिस भी वजह से कैश रिसीव हुआ, वो हमने जितनी भी पेमेंट्स कलेक्ट की यानी कि रिसीव किया, तो उनका हमने हिसाब रखना होता है। और फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें ये मालूम करना होता है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के एंड पे हमने कितना हमारे पास ऑन हैंड कैश की सूरत में मौजूद है, या हमारे किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा मौजूद है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इन एनी बिजनेस, इट्स लाइक बैकबोन। तो इसीलिए इसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसके ऊपर ख़ास एक नज़र रखी जाती है, जिसकी वजह से आपके बिज़नेस की लिक्विडिटी मेंटेन होती है। आइए स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या नया हमारे पास सीखने को है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं।